Okay, guys, good morning. It's on computer. Now, guys, today I'm explaining you how to solve fractional equation. Guys, we know that in our syllabus there are different type of equation: linear equation, quadratic equation, simultaneous linear equation, exponential equation. But when the teacher said solve the equation, the teacher will just try to solve the equation. Teacher will not say solve the simultaneous linear equation, solve the quadratic equation, solve the exponential equation. Teacher only says solve the equation. So guys, first of all we will identify the type of equation, which equation we are solving here, because every equation has different methods to solve it. Like quadratic equation, there are four methods of quadratic equation: factorization method, general quadratic formula method, graphical method, completing the square method. Simultaneous equation has also different method: elimination method, substitution method, graphical method, matrix method. So guys, every equation has different method of solution. ठीक है? So first thing we will identify the equation. But guys, उससे भी पहले जो सबसे important है, this is mathematical rules. What is mathematical? We also call it mathematical rule. We also call it mathematical etiquettes or manners. कि when there is brackets or fractions in equation, when we have brackets in equation, when we have fractions in equation. तो guys, सबसे पहले first of all, this is the main rule. Whenever we have brackets in equation, whether linear equation, quadratic equation, simultaneous, कोई भी equation हो, so whenever we have brackets or fractions in equation, first of all get rid of brackets, first of all get rid of fraction. तो bracket से जान छुड़ाने का मतलब है we will expand the bracket, we will open the bracket. But how can we get rid of fraction if we have fraction in equation? So there are different methods of get rid of fraction. But I am explaining you a new method today. How can we get rid of fractions? ठीक है? So guys, क्यों फ्रैक्शन से जान छुड़ाने? क्योंकि जब तक फ्रैक्शन चलता रहता है, फ्रैक्शन चलता रहेगा, आपको इक्वेशन दिखने में ही डिफिकल्ट लगती है. सो बेस्ट पार्ट इज गेट रिड ऑफ फ्रैक्शन इन द फर्स्ट स्टेप. तो लुक हियर गाइस, दिस इक्वेशन इज फ्रैक्शंस. यहां क्लियरली नजर आ रहा है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट गाइस, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं जब तक ब्रैकेट्स खत्म ना हो, फ्रैक्शंस खत्म हो ना हो, तब तक इक्वेशन मत पहचानो. पहली फुर्सत में फर्स्ट ऑफ ऑल गेट रिड ऑफ ब्रैकेट्स, गेट रिड ऑफ फ्रैक्शन. तो नाउ वी हैव फ्रैक्शनल इक्वेशन. तो how can we get rid of these denominator? Fraction से जान छुड़ाने का मतलब है denominator से जान छुड़ाना. तो how can we get rid of this denominator? So guys, there are different method, but what method I apply? I also apply. I said to get rid of fraction, first of all, the first step of getting rid of fraction is number one, take LCM of all the denominators. I always say take LCM of all the denominators. फ्रैक्शंस खत्म करने के लिए जो मैं स्टेप अडॉप्ट करता हूं, नंबर 1 टेक एलसीएम ऑफ ऑल दैट, चाहे वो राइट हैंड साइड पे चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे. ओके गाइस, नंबर 2 आफ्टर एलसीएम. गाइस, इससे भी पहले एक स्टेप होता है जो अभी मैं नहीं समझा रहा, वो होता है फैक्टराइज द डिनोमिनेटर. लेकिन अभी आपके पास सिंपल डिनोमिनेटर है. टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. नंबर 2 गाइस, एलसीएम मल्टीप्लाई विद all the terms or all the fractions. तो guys, to get rid of fraction, I always follow 3 steps. अभी मैं ऐसे आपको 2 स्टेप बता रहा हूँ, because हमारे पास simple denominator, compound denominator नहीं है. तो take LCM of all the denominator, then LCM multiply by all the terms. तो guys, look here, I am taking LCM of all the denominator. तो लग गया इस 2440. यहाँ पे कुछ भी denominator. तो guys, what is LCM of 244? We know that LCM is 8. So LCM अगर नहीं आता तो भाई प्लीज इस तरह LCM ले लेना. Okay, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4. Then again, one answer is 2 1s are 2 1s are. So guys, LCM is 4. So this LCM will multiply one by one with all the terms. So the first term is 1 upon 2x. So this LCM multiply by 1 upon 2x squared. Then minus. Then this LCM also multiply by this LCM also multiply by 11 upon 4x. Then this LCM, then plus this LCM also multiply by next term 5 upon 4, and this LCM also multiply by 0. Take LCM of all the denominator, then LCM multiply all of them. चाहे वो इस side पे हो equals to उस side पे, it will multiply by all of them. Then next step, after this denominator cancel the LCM or this LCM denominator. Guys, LCM is 4, not 2. I'm really sorry. LCM is 4, guys. LCM multiply by all of them. Okay, guys. इससे क्या होगा? इससे होता है कि this LCM cancel that denominator. Look here, guys. 2 1s are 2 2s are 4. 4 1s are 4 1s are 4 1s are 4 1s are. So guys, we have left 2, and inside the bracket we have 1x square. So
1 लिखते नहीं है. Then what is sign here? Minus and 1, and inside the bracket guide we have minus 11 है, क्योंकि denominator 1 लिखते नहीं है. Then plus 1 multiplied by this 5. Then 4 zeros are 0. Okay guys, जैसे हम लेंगे LCM and LCM multiplied by all the term, तो guys हमारी denominator से जान छूट जाएगी, fractions खत्म हो जाएंगे, because this LCM cancel the denominator, this LCM cancel the denominator, this LCM cancel the denominator. Cancel mean to divide LCM with the denominator by a common factor. तो look here guys, plus 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 2x square plus minus minus 11x plus 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 5 equals to 0. तो guys जैसे ही फ्रैक्शंस खत्म होते हैं, बिलीव मी गाइस, जब हमें इस तरह के डिनोमिनेटर आएंगे x minus 1, तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है. अगर आप फ्रैक्शन चलाते रहोगे तो बहुत बड़ी सॉल्यूशन होगी. तो बेस्ट थिंग इज गेट रिड ऑफ फ्रैक्शन इन द फर्स्ट स्टेप. पहले ही फ्रैक्शन से जांच रहा हूं. नाउ गाइस जैसे हमारा फ्रैक्शन और ब्रैकेट खत्म हो जाते हैं, हमें क्लियरली बताया जाता है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ ऑफ दिस x स्क्वायर, दिस इज लीनियर x, दिस इज x स्क्वायर मीन क्वाड्रेटिक. So guys, अब हम कर रहे हैं factorization method. For factorization method, first of all we will arrange quadratic equation in this form: quadratic linear constant and other side is equal to 0. Yes, it is positive quadratic linear constant and other side is equal to 0. तो guys हम factorization कर सकते हैं. तो factorization करके हम क्या करते हैं? With the help of factorization we will make this expression, this quadratic linear 3 term है 1 2 3, we'll make it single term. तो guys factorization का पहला method है all common. This time we don't have any all common because 2 is a prime number, 11 is a prime number, 5 is a prime number. So there is no common factor which can divide all the prime number. Prime number is equal to 1 in itself. Then x is not here. This time no all common. All common means we will find the common factor in all the term. No all common in all the 3 terms. Then pair common. For pair common guys, we need at least 4 terms. 4 terms क्यों? 4 terms हम 2 pair बनाएंगे. We need 6 terms. We will make 3 pairs. 4 terms, 2 pairs. 6 terms, 3 pairs. So guys, we need even quantity of terms. But look here, guys. How many terms we have right now here? अभी हमारे पास है कितनी term है? 1, 2, 3. Pair भी नहीं है. Then algebraic identity. For algebraic identity, we need first term and last term a perfect square number. This is not a perfect square. This is not a perfect square. Okay? It's mean identity we apply here. Then last is ब्रेकिंग द लीनियर टर्म. तो ब्रेकिंग द लीनियर टर्म अगर आपको याद हो तो उसमें हम 5 स्टेप फॉलो करते थे. स्टेप नंबर 1 होता था ऑर्डर, क्वाड्रेटिक लीनियर कांस्टेंट, ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं. देन स्टेप नंबर 2 क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट. तो गाइस क्वाड्रेटिक इज 2x स्क्वायर एंड कांस्टेंट इज गाइस +5. ओके, प्लस 2 5 is 10x स्क्वायर. स्टेप नंबर 3 होता था गाइस आफ्टर द प्रोडक्ट वी विल फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो 1 10s are 10. This is step number 3. 1 10s are 10, 2 5s are 10. Guys, factor done. Step number 4. With the help of any one of the pair, we have 2 pair, 1 and 10 and 2 and 5. With the help of any one of the pair, we will break this linear term. हम इस linear term को break करेंगे by addition or by subtraction. तो guys इसको plus करके 7 आ रहा है, minus करके 3 आ रहा है. तो this is not a useful pair. तो guys I am taking this 1 and 10. इसका मतलब मैं इस 11 को इन दोनों में ब्रेक कर रहा हूँ by addition or by subtraction. तो guys ये 11 बनेगा by addition, और addition का मतलब होता है same sign. तो इसका मतलब या तो मुझे दोनों प्लस लेना है या मुझे दोनों माइनस. बट what sign I need here? I need here minus. तो guys I will not take plus, I will take both of them minus. Okay, तो माइनस हमारे पास 1 था और 10 था, -1 माइनस है, इसके साथ भी x, इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस. तो गाइस आ गया -11x. जिससे हमने ये लीनियर टर्म ब्रेक करी, उन्हीं दो को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट भी चेक करना है. ये प्रोडक्ट चेक करना है. तो क्या माइनस माइनस इज प्लस, 1 10 is 10, x multiplies x square. तो गाइस हमारे लीनियर टर्म भी वेरीफाई हो गई, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया. इट्स मीन नाउ वी विल यूज दिस पेयर. तो कैसे भी यूज करेंगे? दिस क्वाड्रेटिक टर्म विल रिमेन सेम, दिस कांस्टेंट टर्म विल रिमेन सेम. इसको कैसे ब्रेक करा था? -x and -10x ऐसे ब्रेक करा था. After breaking this linear term, now we will make 2 pair. This is my first pair guys and this is my second pair. So in the first pair we only take common factor of number and variable. So this time we have only common factor of variable. X is common in both. So guys x common. So this x divided by 2x square. तो guys x square का तो x है और common factor x. तो ये x x कट जाएगा. तो guys क्या बच गया? 2x बच जाएगा. तो guys 2 remain in the bracket. X square divided by x, एक x बच गया. Okay, then
this minus, then x divided by x completely cancel. जब completely cancel होता है, it's not 0, it is 1. Okay, x divided by x is not 0, it is 1. Then guys, in the second pair I'm also taking sin common, तो पहले मैंने लिया 5 common, और 5 के बाद मैं ले रहा हूँ माइनस कॉमन. क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए प्लस 2x. माइनस माइनस, तो माइनस माइनस करूँगा तब प्लस होगा. देन 5 2s are 10x. तो क्या गाइस, माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि आई नीड प्लस 2x, तो माइनस माइनस इज प्लस. 5 2s are 10x. Then minus and this plus. So guys, minus plus is minus, 5 1 plus 5. I need same bracket. Yes, we get the same bracket. In the last term, we will write the same bracket as a common factor. So 2x minus 1 common is a common factor use कर लिया, and I will put both the factor x and minus 5 inside the bracket. Guys, factorization is completely done because factorize का मतलब होता है सिंगल टर्म बनाना. तो guys, सिंगल टर्म बन गई. ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को नोट करते हैं. So after factorization is completed, now we make two linear equations. First with first factor and this 0. So 2x minus 1 equals to 0 guys. Then second factor and 0. So x minus 5 equals to 0. So we will make, after factorization we will make two linear equations. First with the first factor in 0, second factor in 0. So guys look here, linear equation solve करने का बहुत simple तरीका था. एक ही मेथड था. वेरिएबल on one side and number on other side. तो लाइक क्या गाइस, 2x यहाँ पे रहेगा, ये माइनस में जब पहुंच जाएगा इट विल कम प्लस 1. ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो गाइस जब उस तरफ जाता है साइन चेंज नहीं होता, ऑपरेशन चेंज होता है. सब्ट्रैक्शन चेंज टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन चेंज टू डिवीजन. तो 1/2 साइन चेंज नहीं होता. इन द सेम वे ये -5 का हो जाएगा प्लस 1. गाइस आई होप आई मेक इट वेरी क्लियर टू यू. थैंक यू गाइस.